अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज आप देख रहे हैं नईम बुखारी यूट्यूब चैनल। बात करेंगे कि बैक्टीरिया के बैक्टीरियल जो सेल है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, तो एक्चुअली उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव फर्दर। हियर यू कैन सी ऑन द राइट साइड दिस इज़ एक्चुअली अ बैक्टीरिया। लेट मी scroll for you. This is a bacteria. You can see that there are multiple components of bacterial structure like capsule, cell wall, plasma membrane, cytoplasm over here, ribosomes, plasmids and pili. You can also see all these structures over here as well. And this one is a flagellum. Okay, bacterial flagellum and nucleated circular DNA. This is a very important point. Means in bacteria there is a circular form of DNA. So you should keep in your mind. Let's move further. So starting the topic in detail, first we should know about the size of living things. Then we will be able to imagine the size of bacteria as well. If we will know about, or just we are going to revise the sizes of living things. So first atoms. Atom lies in the range of 0.1 nanometer. Okay, so amino acids. Actually amino acids are the building blocks of the protein as well. So amino acid size ranges in the 1 nanometer. Okay, so proteins are actually in the range of 10 nanometer to 100 nanometer as well. Most of the time proteins are in the range of 50 or 60 nanometer as well. Further, if we will talk about viruses, because viruses also contain proteins, that's why the viral size also starts from 10 nanometer to 100 nanometer. You can see over here. So viruses sizes are also in the range of 10 to 100 nanometer. These are some generalized information which you can keep in your mind, and it will help you to move towards the further course. Okay, so next, chloroplast. Actually chloroplast is a cellular organelle in plant cells, and chloroplast range of size is 1 micrometer. Okay, 1 multiplied by 10 raised to power minus 6. Okay, further if we are going to talk about most of the bacteria, so bacteria actually lies in the range of 1 micrometer. Micro means if we are going to study microbiology, it's mean we are going to study microorganism, and microorganism size started from the 1 micrometer range. Okay, so this is actually the range of microorganism, and bacteria ranges from 1 micrometer to 100 micrometer as well. So the maximum size of a bacteria will be a 1 micrometer, and the minimum size of the bacteria will be 100 micrometer. Okay, further, plant and animal cell. Plant and animal cell also ranges in the size of 10 micrometer up to 100 micrometer. Means plant के जो cells हैं, जो animals के cells हैं, तो उनका भी जो size है वो क्या किस range में होगा, 10 micrometer से लेकर 100 micrometer तक. Further, we are going to discuss human egg. So human egg size ranges from more above the 100 micrometer. Human egg and frog egg ranges in the size of above the 100 micrometer, and the frog egg size would be 1 millimeter. Okay, further, ant, जो आपके पास चूंटियाँ होती हैं, उनका साइज़ होगा वो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर साइज. द माउथ साइज इज एक्चुअली 1.1 मीटर. ओके, फर्दर ह्यूमन बीइंग साइज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 मीटर. ओके, एंड इफ वी विल टॉक अबाउट ब्लू व्हेल्स, सो ब्लू व्हेल साइज स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर एंड रेंजेस अप टू 100 मीटर अप टू 1 kilometer as well. So blue whales are actually the longest organisms existing in the terrestrial mode of life. Okay, further, these are the some, okay, let's see, these are the some unit parameters, and this graph actually tells you the detail or the summary of the size of prokaryotes and eukaryotes and viruses and atoms as well. This is actually a summary. Means eukaryotes ranges above than 1 millimeter, and prokaryotes ranges in 1 micrometer. So viruses, proteins and atoms ranges from 1 nanometer to 1 micrometer. This is a summary which you can keep in your mind for whole of your course and for other subjects as well. So you never go to cram all the sizes of microorganism or prokaryotes or eukaryotes. You can just keep these abbreviations or these key terms in your mind. Okay, 1 meter is equal to 100 centimeter and is equal to 1000 millimeters. So these are actually unit characterization. You can study. These are the simple things. 1 micrometer contains 1000 nanometer. Okay, और फर्दर हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अच्छा, नाउ शेप्स ऑफ बैक्टीरिया.
अब हम बैक्टीरियल शेप्स की बात करेंगे तो बैक्टीरिया कैन एग्जिस्ट इन नंबर ऑफ शेप्स, वैरायटी ऑफ शेप्स। ओके, तो व्हाट आर दोज शेप्स? लेट्स सी। कोकस, यूजुअली बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ कोकस, लाइक you can see over here, these are the round shapes. Chain, bacteria exist in the form of Coccobacilli, okay, in the form of chain. Sometimes these coccus will combine with each other and there would be formation of a chain as well. So cluster or steps, if bacteria are existing in the form of bunch like this, okay, तो इफ़ लाइक ब्रांच ऑफ ग्रेप्स, अगर ग्रेप्स के बंच की तरह बैक्टीरिया एग्जिस्ट कर रहे हो तो इट्स मीन दिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्टेफ, ओके, एंड स्टेफिलोकोकस एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स और बंचेस एज वेल. क्लस्टर्स और बंचेस आर द सेम थिंग. Further, bacillus, some bacteria are existing in the form of bacillus shape. You can see over here. Here I need to label it, okay, so for you guys this is a bacillus shape, okay. And streptobacillus, अगर streptococcus है and streptococcus अगर वो एक चेन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हम उसको streptobacilli भी कह सकते हैं. फर्दर कोकोबेसिलाई हैं कि अगर कोकोबेसिलाई की उनका शेप कोकस राउंड भी हो और बेसिलस भी हो तो इट वुड बी पॉसिबल. फर्दर विब्रियो की बात करते हैं तो दीज आर द कर्व्ड शेप, ओके. हियर आई विल लेबल फॉर यू, सॉरी, यस. So vibrio like there would be a curve shape, okay. Further spiralum, these will be in the spiralum shape. कर्व या स्पाइरल ऐसे भी हो सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, या फिर आपके पास स्पाइरल फॉर्म में, राइट. सो स्पाइरल फॉर्म दे विल बी, मतलब जो आपके पास स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्पाइरल फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं. स्पाइरोचीट इज़ एन एग्जांपल. सो दीज आर सम बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. So if you have any question you can ask me in comment box. Oh, let's move further for the bacterial structure. Means this is a major topic which actually we are going to study today. Means if we guys need to know about what are the basic components of bacterial cell. So it includes flagellum, pili, capsule, plasma membrane, cytoplasm, cell wall, lipopolysaccharide, teichic acid, inclusion bodies and spores. These are some basic structures which are actually the part of bacteria or a component of bacteria. Here you can see chromosomes, pili. These are the projections which are termed as pili. Ribosomes, bacteria contains 70s ribosomes, okay. तो 70s राइबोसोम्स हमारे पास बैक्टीरिया में मौजूद हैं. इंक्लूजन बॉडीज़ यहाँ पे मौजूद हैं. फ्लेजेलम मौजूद है और कैप्सूल एक्चुअली प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया, ओके. सेल वॉल है आपके पास. सेल वॉल लिपोपॉलीसेक्राइड इन नेचर है. सेल मेम्ब्रेन मौजूद है. हम इन तमाम कंपोनेंट्स को आगे जाके इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे कि अगर पिलस है तो पिलाई कौन सी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है, फ्लेजेला की कौन सी प्रोटीन है, कैप्सूल कौन सी प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दीज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ bacteria as well. So we will discuss in our next lecture, okay.